Hello everyone, this is CSCS Chintan Devalia, teaching financial management at CA intermediate level and strategic financial management at CA final level since last 20 years. I do welcome you all to the wonderful world of financial management. The topic for the day is analysis of leverage. Students, I am sure the preparation level which you might be going through might be a rocking, but after studying this, in fact, it will be double rocking. So student, without wasting more time, let us start with a small recap about the chapter. Coming back to it, student, when I talk about analysis of leverage, student, the question is, what is leverage? So in one word, I can say, leverage indicates what? Risk. Yes, no, इसे लाल अक्षर से लिखा है. Leverage indicates risk. Risk is danger. Doubt. Risk ज्यादा लेना चाहिए या कम लेना चाहिए? सोचिए ना, ज्यादा या कम? ना ज्यादा ना कम. It depends upon the risk-taking capacity of the individual. That means when I talk about risk, student, it is very subjective. For example, आप CA कर रहे हो. Example क्या कर ही रहे हो? है ना, तभी आप मेरे सामने बैठे हो. आप सीए कर रहे हो तो आप बाहुबली हो. आपने हायर लेवल ऑफ रिस्क लिया है स्टूडेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क. क्यों? बिकॉज रिस्क गिव्स रिटर्न्स. एक फेमस वेब सीरीज का डायलॉग है, क्या? रिस्क है तो इश्क है. पर यहां पे इश्क किस चीज से है? पैसा, रिटर्न्स. तो आई कैन डेफिनेटली से रिस्क एंड रिटर्न ट्रैवल्स टुगेदर. जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिटर्न मिलेगा. एंड माइंड वेल, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना तुम्हारे में कैपेसिटी है. दैट मींस अगर किसी का कैपेसिटी कम है, उससे ज्यादा रिस्क ले लिया, प्रॉब्लम है. अगर किसी का कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता, और जिसका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है वो कम नहीं लेना चाहिए. That means when I talk about leverage, student, it's a risk. And in general terms, leverage indicates a relationship between two variables. दो वेरिएबल का internal relationship is nothing but leverage. Coming back to it, when I talk leverage, क्यों leverage मतलब रिस्क हुआ? leverage कंपनी में कहां से आता है स्टूडेंट? तो कंपनी में leverage comes from the word cost. And when I say cost, student, टेक्निकली कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट. तो स्टूडेंट, रिस्क किधर है? वेरिएबल में या फिक्स कॉस्ट में? डेफिनेटली इट इज अबाउट द फिक्स कॉस्ट. तो स्टूडेंट, क्यों वेरिएबल में नहीं है? सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल बढ़ेगा, सेल्स कम, वेरिएबल कम, सेल्स नहीं, वेरिएबल नहीं. इसका मतलब ये हो गया दैट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के साथ फ्लक्चुएट होता है. व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? जो रिमेन्स कांस्टेंट. आप सेल्स कितना ही बढ़ाओ कम करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ कम करो, आपका कुछ होने वाला नहीं है. यहां पे सेल्स एंड प्रोडक्शन, स्टूडेंट, इज अज्यूम टू बी गोइंग टुगेदर. समझा? यहां सेल्स प्रोडक्शन हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहा है. इसका मतलब अगर सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वेरिएबल बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, एंड वही चीज हमको यहां पे कंसीडर करना है. बट फिक्स कॉस्ट क्या है स्टूडेंट? कितना भी प्रोडक्शन करो, आपका फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ या ना? यस. एंड वही चीज इधर आ गया. तो स्टूडेंट, लिवरेज जनरेट्स फ्रॉम द वर्ड फिक्स कॉस्ट. यस, नो? And we better know this fixed cost, student, are divided into two categories. हाँ जी, this fixed cost are divided into two categories. याद करो, operating fixed cost and financial fixed cost. Student, what is operating fixed cost and financial fixed cost? Operating मतलब something which is related to the routine activities of the company. हाँ या ना? For example, you can say rent, salary, depreciation, etc. And what is financial fixed cost? पूरे फाइनेंशियल इतिहास में स्टूडेंट्स, आई रिपीट, पूरे फाइनेंस के इतिहास में दो ही कॉस्ट ऐसे हैं जो फिक्स कॉस्ट है. कौन सा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट. कौन सा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट? एक इंटरेस्ट एंड दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड. एंड स्टूडेंट, इसके अलावा कोई भी कॉस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा. एंड अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो दैट बिकम्स योर टोटल फिक्स कॉस्ट. यस, नो? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा. एंड अगर मैं टेक्निकली चैप्टर को आगे बढ़ाऊं, आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, मालूम होना चाहिए क्या? कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जो रिस्क उत्पन्न होता है उसका नाम है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज.
फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जो रिस्क उत्पन्न होता है उसका नाम है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एंड कंबाइंड लिवरेज कहां से आता है? डिग्री ऑफ फिक्स कॉस्ट, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट है। इन शॉर्ट, अगर मैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल को मिक्स कर दूं तो लॉजिक की बात है, जो आंसर निकलेगा उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। In short, if I start with the recap again, leverage is risk. Risk कहां से आता है? कमिटमेंट। कमिटमेंट कहां से आता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग से जो है वो DOL, फाइनेंशियल से जो है DFL, एंड दोनों को मिक्स करो, इट बिकम्स कंबाइंड लिवरेज। डन, गुड टू गो अहेड। हाँ, इतना तो तुम्हारे खून खून में बोना ही चाहिए स्टूडेंट्स। कमिंग बैक टू इट नाउ, इफ आई एक्सटेंड द चैप्टर फर्दर, स्टूडेंट आपको मालूम है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहां से जनरेट होता है स्टूडेंट? तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जनरेट होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से, यस नो? हाँ जी। एंड टेबल ये रहा, व्हेन आई से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, स्टूडेंट्स वेयर इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट? ये रहा, हाँ है ना? एंड इसका अप एंड डाउन इज अ फॉर्मूला। इसका अप मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन। डाउन मतलब क्या? EBIT। तो इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो स्टूडेंट पहला फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यस नो? यस। हाँ जी। फाइनेंशियल लिवरेज कहां से उत्पन्न होता है स्टूडेंट? फाइनेंशियल लिवरेज उत्पन्न होता है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यस नो? वेयर इज इंटरेस्ट एंड वेयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड? ये रहा। हाँ, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट? इट इज EBIT अपॉन, याद कीजिए, EBT यानी EBIT माइनस IB बोल सकते हैं, माइनस PD अपॉन 1 माइनस T। याद आया? क्यों PD अपॉन 1 माइनस T? लॉजिक की बात है, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? इज आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट इज बिफोर टैक्स, हाँ है ना? एंड लॉजिक की बात है, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड, वो आफ्टर टैक्स आता है तो हम उसको आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस T से डिवाइड करता है। अगर इसका मैं ओवरऑल और बड़ा फॉर्मूला लिखूं जो आपको टेक्निकली नहीं पढ़ना है बट फिर भी पढ़ना चाहे तो, इट विल बी EBIT माइनस I माइनस PD अपॉन 1 माइनस T, यस और नो? बट इंटरेस्ट में PD अपॉन 1 माइनस T नहीं आता स्टूडेंट। क्यों? विद इंटरेस्ट ऑलरेडी प्री टैक्स कॉन्सेप्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड पोस्ट टैक्स कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करता है? प्रेफरेंस डिविडेंड को आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करता है, मालूम है ना? एंड EBIT माइनस इंटरेस्ट के बदले आई कैन वेरी वेल राइट व्हाट स्टूडेंट्स? आई कैन राइट EBT माइनस PD अपॉन 1 माइनस T। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो दिल को छू जाएगा। एंड अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT माइनस PD अपॉन 1 माइनस T, यस नो? यस। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कंबाइंड लिवरेज का हो गया। यानी ऑपरेटिंग का भी रेडी, फाइनेंशियल का भी रेडी, कंबाइंड का भी रेडी। स्टूडेंट चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ लिवरेज। तो स्टूडेंट अगर मैं थोड़ा और टेक्निकली आपको गाइड करूं तो स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला लिवरेज का है, तो एनालिसिस का फॉर्मूला अलग बनता है स्टूडेंट। तो एनालिसिस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैन आई डिराइव एनालिसिस का फॉर्मूला नाउ? तो स्टूडेंट एनालिसिस का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो अलग से। तो इफ आई टॉक अबाउट एनालिसिस का फॉर्मूला स्टूडेंट, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज indicates a relationship of sales to EBIT. EBIT is dependent, हमने पढ़ा है, and sales is independent. एंड कोई भी एनालिसिस का फॉर्मूला जब देखोगे ना, हमेशा डिपेंडेंट ऊपर आता है। तो आई कैन डेफिनेटली से इट्स अ परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपका एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हुआ। अच्छा, अब मैं फाइनेंशियल बात करूं तो स्टूडेंट इट शोज अ रिलेशनशिप ऑफ EBIT ऑन EPS, हाँ या ना? तो EPS क्या हुआ? डिपेंडेंट, EBIT क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। तो फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, हाँ या ना? एंड अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आई कैन डिराइव द कंबाइंड लिवरेज एनालिसिस, इट्स अ परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यस नो? यस। स्टूडेंट चैप्टर का नाम अगेन एनालिसिस ऑफ लिवरेज। नीचे वाला फॉर्मूला एनालिसिस का, ऊपर वाला लिवरेज का है, खत्म। स्टूडेंट इस चार्ट के अंदर आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द लिवरेज। नाउ विद दिस हेल्प ऑफ all the formulas,
आप कोई भी क्वेश्चन लिवरेज का आराम से टैकल कर सकते हैं, हाँ या ना। एंड लिवरेज के लिए आपको और दो चीज आना जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला ज्यादा रिवाइज कर ही रहे तो एक तो आपको ईपीएस का चार्ट आना चाहिए, हाँ या ना। ईपीएस का चार्ट बोलो या स्टेटमेंट बोलो, you should remember it starts with sales minus variable cost gives you contribution, minus fixed cost gives you EBIT, minus interest gives you EBT, minus tax gives you PAT minus preference dividend gives you profit for equity shareholders, divide by number of equity shares gives you earning per share. कॉन्फिडेंट। एंड दूसरा आपको जो याद रखना है इज अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। याद करो, व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। द फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नीडलेस टू मेंशन, आपने ये चीज कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं यहां पे आ भी जाता है। कॉन्फिडेंट। तो दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर एनालिसिस ऑफ लिवरेज। लिवरेज इज रिस्क। रिस्क कहां से आता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने पार्ट के? दो पार्ट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग से आया डीओएल, फाइनेंशियल से आया डीएफएल, दोनों को कंबाइन किया, आ गया डीसीएल। डन। अच्छा, अब चैप्टर का नाम एनालिसिस ऑफ लिवरेज। एंड एनालिसिस ऑफ लिवरेज में दो टाइप का फॉर्मूला होता है, एक एनालिसिस का, एक लिवरेज का। लिवरेज बताता है रिस्क कहां से आता है, तो फिक्स कॉस्ट का अप डाउन ऑपरेटिंग हो गया। इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड का अप डाउन देखोगे तो इट्स अ फाइनेंशियल लिवरेज। एंड दोनों को कंबाइन कर दिया, इट्स अ कंबाइंड लिवरेज। ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, ये एनालिटिकल एक्सप्रेशन देता है। एंड एनालिसिस क्या बोलता है? सेल्स का इंपैक्ट ईबीआईटी पे ऑपरेटिंग, ईबीआईटी का इंपैक्ट ईपीएस पे इसका, दैट इज फाइनेंशियल, एंड सेल्स का इंपैक्ट ईपीएस पे इज कंबाइंड लिवरेज। दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? गुड टू गो अहेड। हाँ जी, आइए अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ जाते, थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते क्वेश्चंस का। याद करिए स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी 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 बेसिक एग्जांपल। दिस एग्जांपल गाइड्स यू अबाउट व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। स्टेटमेंट बनाओ, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड आ गया। क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, एक ही कंपनी की बात हो रही है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड। वेरी सिंपल स्टूडेंट, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर स्टाइल में दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है, वन इज 5 मार्कर, सेकेंड इज 10 मार्कर। ये सब 5 मार्कर वाले क्वेश्चन है, आराम से 5 मार्क्स कैश मिलेगा आपको। टेबल बनाया, फॉर्मेट बनाया, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड, यू आर थ्रू विथ द आंसर। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम। सिर्फ आपको डीओएल पूछा गया स्टूडेंट। एंड याद रखना, ड्यूएल के लिए आपके पास सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एंड इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कहां से निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से आप फिक्स कॉस्ट निकलेगा स्टूडेंट। हाँ, तो यहां से आप फिक्स कॉस्ट निकालो, लगाइए ऑपरेटिंग लिवरेज में, यू आर गुड टू गो अहेड विद द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ बोथ 25,000 एंड 30,000। कॉन्फिडेंट? दैट वाज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, आपके आईसीआई के पेपर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज दिस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बहुत सिंपल है। आपको बैलेंस शीट दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट है, एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है। स्टूडेंट, एसेट टर्नओवर रेशियो से क्या मिलने वाला है? रिमेंबर द फॉर्मूला, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। आपके पास टोटल एसेट्स है, हाँ जी, आपके पास टोटल एसेट्स है, तो सेल्स अपॉन अगर आप टोटल एसेट्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेल्स, हाँ या ना। एंड सेल्स लगाया, लाइफ जिंगा लाला, मस्त एकदम। सेल्स है, वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट है, सब रेडी है, इमीडिएटली आपका ईपीएस आ जाएगा। एंड उसी टेबल को एक्सटेंड करोगे तो डीओएल, डीएफएल, डीसीएल तीनों तीन रेडी है। स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड एग्जांपल। एंड इस क्वेश्चन में कई बार इन्होंने पॉइंट नंबर 5 करके पूछा गया कमेंट। स्टूडेंट, अभी नॉर्मली कमेंट क्या करते हो आप? अगर 2 कंपनी है तो एक हाई रिस्क है, एक लो रिस्क है। 3 कंपनी है तो एक हाई है, एक लो, एक मॉडरेट है। अब ये तो एक ही कंपनी है स्टूडेंट, एक ही कंपनी है जिसका नाम इन्होंने दिया नहीं, बड़ा कंपनी है। अब एक कंपनी में आप कमेंट कैसे करेंगे? तो एक कंपनी में जब आपको कमेंट करने का बारी आएगा, यू कांट जस्टिफाई कि ये हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। तो यहां पे जब कमेंट करेंगे तो कमेंट ऑन द एनालिसिस ऑफ लिवरेज। एग्जाम्पल लो, आपका ड्यूएल इधर 2 है, तो 2 का मतलब
You to write with 1% change in sales, EBIT will change by 2%. Same way financial leverage, same way combined leverage. Are you getting this? So that is all about question number 4. Question 5, student, very good example. हाँ, आपके पास DOL है, DFL है, फिक्स कॉस्ट है, सेल्स है, डिबेंचर है, इक्विटी है, टैक्स है, बराबर. तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लिवरेज ढूंढना है. DOL DCL की मदद से ऑपरेटिंग आ जाएगा, सॉरी फाइनेंशियल आ जाएगा. पीवी रेशियो EPS ढूंढना है बाय प्रिपेयरिंग अ टेबल. कौन सा टेबल? सेल्स से लेके EPS का टेबल बनाइए. आंसर डन है. एंड यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि अगर एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, किसका? इंडस्ट्री का. तो कंपनी का हाई है कि लो है? तो आप बोल सकते हो आप ऑपरेटिंग लिवरेज, सॉरी आप यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन एसेट्स. बट स्टूडेंट यहाँ एसेट्स नहीं है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड आपका डिबेंचर और इक्विटी का जो टोटल होगा वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज नथिंग बट एसेट. ये पॉइंट याद रखिएगा. एग्जाम में अगर एसेट्स नहीं दिया तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका एसेट्स में गिना जाएगा, और वो एसेट्स यहाँ पे आप गिनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 38.25. हाँ जी, तो दैट वाज गुड पॉइंट. एंड यहाँ पे कैलकुलेट लेवल ऑफ सेल्स एट विच EBT विल बी 0. EBT विल बी 0 मतलब आप रिवर्स जाइए, EBT 0 लेके उल्टा जाइए, सेल्स मिल जाएगा आपको. और इवन इसको आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो DCL के फॉर्मूला से भी लगा सकते हो. बट आई वुड डेफिनेटली से DCL का फॉर्मूला तभी लगाना जब आप टेक्निकली बहुत साउंड है. अदरवाइज मैथमेटिकली द बेस्ट वे इज फॉर्मेट बना के उल्टा जाइए, सेल्स आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा. कॉन्फिडेंट एवरीवन? हाँ, आइए क्वेश्चन 6. स्टूडेंट, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन. 2 लाइन का क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया है. पहले में ROI पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ, उसके बाद फेवरेबल या अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपका रिटर्न फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है तो फेवरेबल लिवरेज है, और अगर रिटर्न फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से कम है तो आपका अनफेवरेबल है. इस क्वेश्चन में आपका रिटर्न 27% है अगेंस्ट द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट 9%. देखो इंटरेस्ट 9% है, तो इसका मतलब दिस इज फेवरेबल, बराबर. फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल. बट वही उल्टा होता, रिटर्न 9% होता, समझना, एंड आपका कॉस्ट 27% होता, तो इट्स अनफेवरेबल. समझा? देयरआफ्टर इट्स अ कमेंट ऑन कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई और लो, दैट इज फाइन. कैलकुलेशन ऑफ, ये तो बहुत इजी है, बचपन की बात है, बचपन का प्यार है. ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, ये भी आ गया. इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट EBIT विल इंक्रीज? EBT. और ये तीन स्टूडेंट आप चाहो तो इसको आप लिवरेज से भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप मैथमेटिक्स टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो. स्टूडेंट, योर कॉल. अगर आपका लिवरेज एनालिसिस पे कमांड अच्छा है, परसेंटेज चेंज से निकालो. लेकिन आप सा डर लगता है ना, मैं मैथमेटिक्स से करूंगा, तो फॉर्मेट बना के उल्टा जाओ, आपको जो बैलेंसिंग फिगर बोला है वो मिल जाएगा आपको. एम आई क्लियर? हाँ, आइए नेक्स्ट. स्टूडेंट, क्वेश्चन 7. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे प्रेफरेंशियल आपका एंटर हो रहा है चैप्टर में. द फर्स्ट क्वेश्चन वे प्रेफरेंशियल इज एंटरिंग, वो डेब्यू कर रहा है आपका चैप्टर में. और यहां पे जब प्रेफरेंस आता है तो PD/1 - T करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये. आर यू गेटिंग दिस? EPS ढूंढना है, बहुत इजी है, टेबल बनाओ, बात खत्म. फिर वापिस इसी EPS पूछा है, विद बोथ 30% चेंज, इंक्रीज डिक्रीज इन EBIT. तो यहां पे आप क्या करोगे? वापिस लिवरेज से भी कर सकते हो एंड मैथमेटिकल टेबल से भी कर सकते हो. नेक्स्ट, DFL एट ओनली करंट लेवल पूछा है. करंट मतलब ओनली प्रेजेंट, प्रपोज लेवल पे मत ढूंढिएगा, खाली करंट पूछा है. एंड व्हाट एडिशनल डेटा डू यू नीड टू कंप्यूट कंबाइंड एंड ऑपरेटिंग लिवरेज? स्टूडेंट, आपके पास फाइनेंशियल डेटा ऊपर है, नीचे ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड ढूंढना है, तो आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट चाहिए. हाँ या ना? दैट वाज वेरी सिंपल थियरी क्वेश्चन. क्वेश्चन 8. स्टूडेंट, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी स्मार्ट एग्जाम्पल. कॉन्फिडेंटली लास्ट डे रिविजन बनता है. हाँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिवरेज एंड रेशियो बोथ. हाँ, ध्यान दो, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, बराबर. स्टूडेंट, पैट दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT. EBIT का 1.5 टाइम्स ऑपरेटिंग हो जाएगा, एंड दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इंक्लूडिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स, दोनों मिलेगा. स्टूडेंट, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ 96,800 विच इज डेप्रिसिएशन. तो बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा आपको?
वेरिएबल कॉस्ट। इक्विटी डिविडेंड दिया है 15%, टेबल में नहीं आएगा, टेबल ईपीएस तक की जाएगा, आपको ये रेशियोज में हेल्प करेगा। मार्केट प्राइस स्टूडेंट टेबल में नहीं आएगा, ये रेशियोज में हेल्प करेगा। आगे पढ़िए, क्या पूछा है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज बनता ही बनता है, टेबल बनाओ, डन है। दूसरा, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी। व्हाट इज कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी स्टूडेंट? It's nothing but preference dividend and equity dividend coverage ratio, earning yield ratio and price earning. I'm sure ratios याद होगा आपको। earning yield क्या आएगा, EPS upon MPS into 100, हाँ या ना? and price earning क्या होगा, price upon earning, कौन सा price, market price upon earning per share। हाँ, ये दोनों आपका रेसिप्रोकल एक दूसरे का, बट पूछा है तो दोनों ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ, एंड लास्ट फंड फ्लो। फंड फ्लो में क्या आएगा, सबको पे करने के बाद व्हाट इज द फंड्स अवेलेबल फॉर यू, हाँ, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इक्विटी डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों प्लस नॉन कैश, क्योंकि वो पैसा बिजनेस के बाहर जाता नहीं है। तो ये आपका नेट फंड फ्लो आ गया। क्लियर एवरीवन? आइए नेक्स्ट स्टूडेंट, अगेन अ वेरी यूनिक, इंपॉर्टेंट तो अलग बात है, बट ये यूनिक बहुत है स्टूडेंट। क्यों यूनिक है, जरा देखिए। क्वेश्चन में आपको सब डेटा दे दिया है। पॉइंट नंबर 2 वेरी मच डूएबल। ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन कंबाइंड लिवरेज इज 3। ऑपरेटिंग ढूंढना है, कंबाइंड दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग तब आएगा जब आप पहले क्या ढूंढेंगे, डीएफएल। तो पहले आप डीएफएल ढूंढिए, डीएफएल की मदद से आपको ऑपरेटिंग मिल जाएगा। कैसे, कंबाइंड दिया हुआ है। एंड स्टूडेंट आई एम श्योर ये क्वेश्चन का पार्ट जो आपने सेगमेंटेशन वाला पार्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस एंड बोरिंग, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो इक्विटी होल्डर है, द रियल ओनर ऑफ द कंपनी का जो रिटर्न आ रहा है। यू रिमेंबर इस क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6% है, वो 13.6 कैसे कमा रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिबेंचर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्विटी होल्डर इटसेल्फ। एंड उन तीनों का बाइफरकेशन करके आपको बताना था कि इक्विटी जो कमा रहा है, इक्विटी मतलब यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, समझा, इक्विटी शेयर होल्डर जो कमा रहा है वो डिबेंचर के कारण इतना कमा रहा है, प्रेफरेंस के कारण इतना कमा रहा है, खुद के प्रेजेंस के कारण इतना कमा रहा है। दैट इज नथिंग बट सेगमेंटेशन। तो यहां पे आपको एक टेबल पूरा ईपीएस का बनाना है एंड आपको कैलकुलेट करके बताना है कि सेगमेंटेशन कैसा है। क्लियर एवरीवन? डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद स्टूडेंट टू बी डिस्कस था, ये पहला वाला तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट आई वुड डेफिनेटली से दिस इज अगेन लास्ट मिनट रिवीजन, वेरी गुड एक्सेलेंट एग्जांपल। स्टूडेंट एक ही कंपनी है, पर एक ही कंपनी में प्लान ए बी दिया फाइनेंशियल एंड सिचुएशन 1 एंड 2 दिया है। तो स्टूडेंट आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखो, फिक्स कॉस्ट जो लग रहा है 15 और 20 है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी दो अलग अलग बन रहा है। मतलब आपको ऐसा करना पड़ेगा, सिचुएशन 1 में प्लान ए एंड बी लेंगे, सिचुएशन 2 में प्लान ए एंड बी लेके आप 4 अलग अलग सिचुएशन वर्क करेंगे स्टूडेंट, एंड चारों सिचुएशन का आप ड्यूएल निकालोगे, चारों का डीएफएल, चारों का डीसीएल, मतलब आपके नंबर ऑफ लीवरेज 12 हो जाएंगे। 4 ड्यूएल, 4 डीएफएल, 4 डीसीएल, 12। कंपनी कितना है, एक कंपनी, एक 12 लीवरेज, बहुत नाइंसाफी है। कंपनी एक है तो लीवरेज भी एक होना चाहिए, 1 ऑपरेटिंग, 1 फाइनेंशियल, 1 कंबाइंड। बट स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन वेयर कंपनी इज इवैल्यूएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ अंडरटेकिंग द रिस्क। इसलिए ये अकेला क्वेश्चन, मोनोपोली क्वेश्चन ऐसा है जहां पे वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर एप्लीकेबल। बाकी सब क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी ने रिस्क ले लिया था, आप सिर्फ जस्टिफाई कर रहे थे कितना रिस्क लेना है। दिस इज अ एक्सेलेंट एग्जांपल वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कंपनी हैज 4 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ टेकिंग अ रिस्क, लेट कंपनी डिसाइड विच इज द वन विच दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। यहां पूछा नहीं है आपको, बट आपको 4 डीओएल ढूंढना है, 4 डीएफएल, 4 डीसीएल ढूंढना है। कॉन्फिडेंट? आगे पढ़िए स्टूडेंट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन 1, होमवर्क का बहुत इजी था स्टूडेंट। अगेन वेरी मच एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, कम ऑन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। हाँ, जो डेटा दिया है और आपको जो रेडीमेड हिंट दिया है, लाइक यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज है, यहाँ ऑपरेटिंग है, तो यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का ब्रेकअप वाला फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ब्रेकअप वाले फॉर्मूला से कीजिए।
EBIT अपॉन EBIT माइनस आई, याद करो ऐसा पढ़ा है ना हमने, EBIT अपॉन EBT, EBIT यहाँ प्रेफरेंस नहीं है, प्लीज साइड में रखिएगा, EBIT अपॉन EBT विच कैन बी टर्म्ड एज EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। तो ये इंटरेस्ट आपके पास होगा जिससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ सकते हो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सेम वे ऑपरेटिंग में भी आप यूज कर सकते हो, खाली बता रहा हूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे आप यूज करें, बट ब्रेकअप वाला फॉर्मूला याद रखना, कई बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हेल्प करेगा। हाँ, आइए स्टूडेंट, यहां पे आपको इंटरप्रिटेशन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीन कंपनी है PQR, तीनों का DOL DFL DCL निकालिए एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। स्टूडेंट ये 3 कंपनी वाला है, कुछ नहीं, 3 पैराग्राफ लिखने का, 2-2 लाइन का, यहां कोई PhD नहीं करना है, थीसिस नहीं लिखना है। PQR डिसाइड करना, कंबाइंड लीवरेज जिसका ज्यादा है वो हाई रिस्क हो गया, कंबाइंड लीवरेज जिसका कम है वो लो रिस्क हो गया, एंड जो बाकी का बच गया कंबाइंड लीवरेज वो मॉडरेट रिस्क हो गया। तो एक हाई रिस्क होगा, एक लो रिस्क होगा, एक मॉडरेट होगा। स्टूडेंट का 4 कंपनी आ गया, एक हाई एक लो 2 मॉडरेट, 2 कंपनी आया तो एक हाई एक लो, 3 है, एक हाई एक लो एक मॉडरेट। लैंग्वेज बहुत सिंपल रखना, कॉन्फिडेंट। आइए क्वेश्चन 4 स्टूडेंट बहुत इजी है, एक ही कंपनी की बात हो रही है जहां पे 2 अलग अलग लेवल का ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल ढूंढना है। तो ईपीएस का टेबल 2 बार बनाओगे, उस पर DOL DFL ढूंढना, DCL नहीं पूछा है। हाँ, आपको क्या पूछा, DOL एंड DFL, तो DCL नहीं पूछा तो टेंशन नहीं लेने का। एंड परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस, तो आपको दो ईपीएस निकालना है और परसेंटेज डिक्रीज बताना है, दैट इज डन। Thereafter question 5 जैकपॉट है, खाली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ढूंढना है। एंड क्वेश्चन 6 अगेन इट्स अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, whereby you have to prepare इनकम स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहां पे भी देखो DOL रेडी है, DFL रेडी है, इसकी मदद से आप आराम से मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढ के आप आराम से इनकम स्टेटमेंट वर्कआउट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट आई हैव जस्ट गिवन अ क्विक रिकैप ऑफ द होल चैप्टर। स्टूडेंट में जहां जहां इंपॉर्टेंट बोला हूं वो क्वेश्चंस विदाउट फेल आपको लास्ट डे रिवाइज करना ही है, प्लस आप एक्स्ट्रा आपका हिसाब से करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं जो बोला वो तो करना ही करना है। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? So I think student this is I think more than enough as far as a quick recap is concerned. With this I would love to take some add-on part for you. I'm sure this add-on part will make the level of chapter reach a new heights. Let me check the first part. I've already kept it ready for you. Student, check out the first question. Huh? From the following information extracted from the books of account of IMAX Limited, calculate, underline, percentage change in EPS if sales increase by 10%. Student, sales change हो रहा है, EPS ढूंढना है, sales change हो रहा है, EPS ढूंढना है. Think, which leverage? Sales to EPS. Perfect, combined leverage. And fixed cost is given 157,500. EBIT is given 31,50,000. EBT is given 14 lakh. Students, the big point is the sales given? No. Is the EPS given? No. Then the question arises, how we can calculate? Student, you can calculate with the help of combined leverage. Because what is given? Sales change is given 10% and EPS you have to calculate. So I can easily start with calculation. ध्यान दीजिए. Please concentrate. When I say, is sales given? No. Is variable cost given? No. Is contribution given? No. Student, is fixed cost given? Yes. Check out, fixed cost is 1,57,500 students. EBIT is given, students. Check out EBIT 31,50,000 and interest is not given, but we are very much ready with EBT. Yes, no? Yes. What is EBT given, student? Check out in the question. EBT is 14 lakh. That means I am very much comfortable calculating the remaining balancing figure. Huh? Your interest will be 17,50,000. And if I go backward, 31,50,000 plus 157,500, your contribution is 33,07,500. Yes, no?
Now, honestly speaking, students, the table I have taken is only for your comfort level. In your exam, you can or you cannot prepare the table, provided you are comfortable that EBIT plus EBIT plus fixed cost will give you direct contribution. So I can calculate DCL now. What is DCL? Contribution upon EBT. What is contribution? 33 lakh 7,500. EBT is 14 lakh. So I can directly calculate DCL. Student, there is no hard and fast rule that you need to calculate operating and financial both in order to calculate combined leverage. No, you can directly apply the formula, that is 33 lakh 7,500 divided by 14 lakh. Student, my combined leverage is 2.3625. Yes, no? Now this is mathematics. Now I need to apply the analysis of 2.3625. Students, remember what is the analytical formula? With help of DCL, we can say DCL is percentage change in EPS. Remember, divide by percentage change in sales. Do we have percentage change in EPS? No. Do we have percentage change in sales? Yes, plus 10. This is 2.3625. Student, apply the mathematics now. Can I calculate the answer? And your answer is going to be yes, 23.625%, and that too positive. Yes, no? Why positive, student? Because sales is increasing by 10%. And as sales is increasing by 10%, okay, you need to calculate percentage change in EPS, that is 23.625. Clear, everyone? Very simple 5-marker example. Standard. Again, preparing table is optional if you understand that fixed cost plus EBIT is going to be your contribution. Otherwise, no harm in preparing a table itself. Clear, everyone? That was the one small example. Clear? Huh? Check out number 2. Again, very simple. Consider the following information of Mega Limited. Production level 25,000, contribution 150 rupees, operating is 6, combined is 24. I am sure your mind has started working. You are able to calculate financial leverage, but no need. No need. Check out further. Tax rate 30%. What they've asked you? Calculate earning after tax. Student, they've asked you profit after tax or earning after tax. Question starts. From where should we start? Students, every time you are not supposed to prepare a full-fledged format. Just concentrate well now. Starting with number 2. Student, check out. Do we have calculation of DCL ready? Why DCL? Because DCL is given 24. Can I calculate DCL directly? Yes. Contribution upon EBT. Do we have a contribution ready? Yes. It is 150 rupees contribution into 2500 units. EBT is missing and DCL they have given. Check out DCL is how much? Check out DCL is how much? DCL is already given to you. DCL is 24. So if I work on this, this is 24. Therefore, I can easily calculate EBT now. That is 150 into 2500 divided by 24. This is 15625. This is EBT. What is the target? Is PAT. Now I can say that EBT is 15625 minus tax 30% given. So this is 30% is 4687.5. Can I calculate profit after tax, which is earning after tax? 10937.5. Very simple. Student, the moment we calculate DCL, applying the concept of DCL, we calculated EBT minus tax gives you PAT. 5 marks.
Student, even you can do this example by calculating DOL, DFL, then DCL and then calculate the answer. But no need. When the concept is strong, you can get me the smart answers. Clear everyone? Okay, good to go ahead. Come to question number 3. Student, check out this. From the following information, prepare income statement. Check out income statement of A and B. Student, only income statement. And check out A and B. Something new. Student, very rarely student knows this. Margin of safety. Student, what is margin of safety? I will take it later on. Interest is given. Profit volume ratio is given. What is profit volume ratio? Contribution upon sales into 100. Further, financial leverage is given and tax rate is given. Student, I will be just concentrating on company A. Thereafter company B, you can take it at your own level. Come to the example. Yes. Student, if I just prepare income statement, that is question number 3. It goes like this. This is only for company A. I can say sales minus variable cost gives you contribution minus fixed cost gives you EBIT minus obviously interest gives you earning before tax. Student, minus tax gives you profit after tax. And there is nothing like preference, dividend and so on. So I can just put a small end to this. Student, check what are the ready-made figures given in the example. The ready-made figure, company A, interest is only given. Yes, no? Interest is given, students. Let me check this. Interest is, I think 3,000 if not wrong. And tax is 45%. Am I clear? Interest is 3,000, tax is 45%. Yes, very much perfect. Now, can I proceed? Interest is ready-made figure, student. So applying working note 1, which will be the concept of DFL. Why DFL? Because interest is given. So I can take EBIT upon EBT or EBIT minus interest, and DFL is given, student, in the example. Check, DFL is 4. So applying that concept, EBIT upon EBIT minus 3,000 is 4. Can I calculate EBIT now, students? Hanji, can I calculate EBIT now, everyone? So obviously EBIT will be 4,000. If I cross multiply and do the mathematics, so putting 4,000 here, this will be 1,000. 45% is 450. So 550 is PAT. Simple. The moment I get EBIT, I can proceed further and close up to PAT. Okay, now working note 2. Students, for working note 2, I need to take help of margin of safety. What is margin of safety given, student? That is 0.20. What is margin of safety, student? It's a reverse of operating leverage. What is operating leverage? Contribution upon EBIT. So this is EBIT upon contribution. This is 0.2. EBIT is what? 4,000. Contribution missing. This is 0.2. Student, this is a very, very important concept of margin of safety. Students, I can easily calculate now. My contribution will be 20,000. Am I right? Yes, no? Students, even there is a different way of calculating it. Can I call DOL as 1 upon margin of safety? Reverse, reciprocal. So DOL is going to be 1 upon 0.2. So if I talk about 1 upon 0.2, this is going to be 5. Yes, no? So you have calculated DOL 5, and now applying DOL. DOL is contribution upon EBIT. You can calculate 5. Contribution we don't have. We have EBIT 4,000. So even we can calculate contribution as 20,000. So student, margin of safety, if I just talk on a very simple formula base, margin of safety is reciprocal of DOL. So I can say margin of safety is either EBIT upon contribution or DOL is 1 upon margin of safety.
Student, there is a third concept, which is a technical concept which I just pinpoint that. Margin of safety indicates excess of sale over break-even sales. That means any sale over your break-even sale is margin of safety. But rather than going into that technical part, I would say remember this two formula. Margin of safety is either EBIT upon contribution or DUL is 1 upon margin of safety. Clear everyone? Even you can say margin of safety is 1 upon DUL. It's one and the same. So with the help of this, I can easily say my contribution is 20,000 students. I can take contribution 20,000. So balancing figure, your fixed cost is 16,000. And as the PV ratio is given, student, what is the PV ratio? 25%. So if I take that 25%, I can say our contribution will be 25%, provided sales is 100. So this is 75%. Can I? So this is going to be 25% is 20,000. So this is going to be 80,000 and this is 60,000. Clear everyone? This is pure simple income statement of company A. On this basis, you can, as a part of practice, prepare income statement of company B. Clear everyone? So what we have done, we have taken working note 1, whereby we have calculated EBIT. We have taken working note 2, whereby I have introduced a very good concept of margin of safety, which is either EBIT upon contribution or DUL is 1 upon MOS or MOS is 1 upon DUL. It's one and the same. Okay everyone? Good to go ahead? So do remember concept of margin of safety. Next, I can take question 4. Check out question 4, students. What is given? Very simple. Sales revenue of TM Excellence is 20 per unit and output is 20 lakh rupees. So you can easily calculate number of units. Contribution is 10 lakh. At present level of output, DUL of the company is 2.5. Student, at present level output, DUL of the company is 2.5. DUL is given. The company does not have preference share. Matlab, no preference dividend. Number of equity share are 1 lakh. Applicable income tax rate is 50% and interest rate on debt capital is 16%. Preference dividend is not there, but interest is there. What is EPS? At sales revenue of 20 lakh. Students, you have to just calculate earning per share by preparing a table. And the amount of debt capital of the company, if 25% decline in sale will wipe out the EPS. That is something different. Let us calculate. I will take this as answer 4. Student, they have given you DUL. What is formula of DUL? Contribution upon EBIT, yes, no? Do we have contribution 10 lakh? We don't have a EBIT. But student, we have this as 2.5. So can I calculate EBIT as 4 lakh? I think very simple. Yes, no? With that, I can easily calculate now. Fixed cost. What will fixed cost? That is contribution, that is, you can say contribution minus EBIT. What is contribution, students? 10 lakh. EBIT is 4 lakh. So logically we can say fixed cost is 6 lakh. Am I clear? Absolutely. Now, concentrate well. If I apply the concept now, they've asked you the income statement whereby you can calculate EPS, yes, no? But that does not mean every time you prepare a full-fledged income statement. Still, if you are willing to do that, you can. Think, do we have sales? 20 lakh.
Variable cost is missing, but contribution is 10 lakh. Yes, no? If contribution is 10 lakh, the variable cost is 10 lakh. Simple. Balancing. Student fixed cost, we have just calculated 6 lakh. As your EBIT is going to be 4 lakh. Am I clear, everyone? We are done with EBIT. EBIT is 4 lakh. Now the question arises, sir, where is the interest? 16% rate is given, but we don't have an interest amount because the date capital is missing. Tax rate we have, PAT obviously missing. Student preference dividend, they have said it is dash. So I can easily calculate balancing figure as profit for equity shareholders. Yes, no? I can take divide by number of equity shares. That will give me earning per share. Student question arises from where I can get the interest. Check the last line of the question, very important. What will be EPS at sales return 20 lakh? And amount of debt capital of the company if 25% decline will wipe out EPS. Matlab, if the share decrease by 25%, EPS will become 0. That means EPS, whatever EPS is right now, it will become 0. That means there is a 100% fall. So 25% change in sales will bring 100% change in EPS. And student, with that concept, I can easily apply the concept of just big concept. Can I apply concept of DCL? That is percentage change in EPS upon percentage change in sales. Student, change in EPS is 100%. Due to change in sales is 25. When I say EPS is wipe off, matlab, it means that EPS will fall by 100%. And when it falls by 100%, student, that means your combined leverage is 4. Now, with the help of degree of combined leverage, student, I can calculate contribution upon EBT. Yes, no? And this is 4. Do we have contribution? 10 lakh? Yes. Do we have EBT? No. This is 4. That means, can I calculate your EBT? Yes. That EBT will be 2,50,000. Very, very important application of combined leverage. This was an indirect way of giving you combined leverage. That due to change in sales by 25%, EPS will change by 100%. And that gives you combined leverage 4. Now, students, concentrate well. EBT is 250. The balancing figure is interest 1,50,000. That's it. Good to go ahead. Check out tax rate, student. Tax rate is how much? 50%. I can say this is 1,25,000. Am I right? PAT is 125 now. Preference is 0. This is 125. And what are the number of shares given, students? Number of shares are how much? Number of share is 1 lakh. This is divided by 1 lakh. So 125 divided by 1 lakh, your EPS is 1.25. Student, very class interpretation of combined leverage. Now, again check the question. What they've asked you is, what is EPS? Done. And amount of debt capital. Students, now if I answer their queries, student, the first query is, what will be the EPS? Yes, I can say EPS is 1.25. And number 2, amount of debt. So student, interest is like 1,50,000. Interest rate is 16%. So can I calculate amount of debt? 150 divided by 16% is 9,37,500. Amount of debt we have calculated with the help of comparison of interest and interest rate. The best part about this example is it's a computation of combined leverage. Fair enough. So again I revise. With the help of DUL we calculated EBIT. With the help of EBIT we calculated fixed cost. Applying a table and thereafter applying a concept of combined leverage, we calculated EBT and interest, and thereafter after calculating EPS, we calculated debt capital.
Fair enough?